Hello and welcome to another Wild Rift gameplay. Today I'm playing Orianna in the mid lane and I'm against Ziggs. So in our team we have Shen as a jungler, Garen top lane, and duo lane we have Sona and Lucian. So we have a pretty solid team, quite tanky also with Garen and Shen. So let's see how it goes. In opponent we have Ziggs. And then we have a Riven jungle, so that can be a problem because Riven अभी buff हुई है, उसका ultimate buff हुआ है, तो that can be a problem. Also Ziggs is a problem. So see why I picked Orianna this game. मैंने Orianna इसलिए लिया because मेरे को ये लगा कि already उन्होंने Ziggs ले लिया था, तो मुझे लगा कि I should take something जो Ziggs के against lane कर सके और easily bully ना हो, तो one that champion is Orianna. Even though आप देखोगे कि in game Ziggs has bullied me so much, so that's how you neutralize the lane with Orianna. So even though I got bullied, I know that my damage Ziggs को अभी buff मिला हुआ है 1-2 पैच पहले, और उसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, और उसने जो रून सेटअप किया है कॉमेट एंड ऑल दैट, वो सारे डैमेज वाले रून्स हैं. मेरा रून ऑन द अदर हैंड इज़ मोर ऑफ डिफेंसिव. मैंने हेक्स फ्लैश ले रखा है, फेज रश ले रखा है, तो द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव इज टू गो फॉर द लेट गेम. अर्ली गेम मेरे पास ज़्यादा डैमेज नहीं. आई नो दैट आई कांट किल दैट Ziggs एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट ही कैन किल मी इजीली. तो मुझे वो समझना पड़ेगा और उस हिसाब से लेन करना पड़ेगा. न्यूट्रलाइज का मतलब है कि ओरियाना आप तब लेते हो, ओरियाना डजंट हैव एनी काउंटर पिक्स. लाइक assassins kinda counter her, but not really. Like if she is farming well from afar, there is no lane counterpart to Orianna. तो इस गेम में मैंने इसीलिए लिया है कि मैं आराम से फार्म कर पाऊँ और लेट गेम कैरी कर पाऊँ. Then I'll show you in this game. I'll show you the strength of this pick. Like why Orianna can win you so many games. तो हमारा जो DPS है वो काफ़ी अच्छा है Orianna से लेट गेम में. काफ़ी कंसिस्टेंट डैमेज देती है. तो अभी लेनिंग फेज इज गोइंग प्रीटी वेल. आई एम लास्ट हिटिंग वेल, ऑल्दो आई एम गेटिंग बुलीड बाय दिस Ziggs. सी आई एम ऑल्सो पोकिंग हिम, बट मेरा डैमेज उसके डैमेज के आगे कुछ लग ही नहीं रहा है, तो उसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा है मुझसे. एंड ही इज शोविंग अस इन ऑल्सो. नाउ ही वाज रिकॉलिंग एन अवार्ड, सो मैंने सोचा कि थोड़ा एनोइंग मैं भी बन सकता हूँ. And also I have bone plating, so eventually he recalled, but now you can see that this Riven is blocking me to clear the wave, and this helps Ziggs so much, just by her standing there. This has helped Ziggs so much. Like he recalled, now he's back with so much gold, everything, item advantage, and now I'll have to go back and दिस डिले रिकॉल, इसकी वजह से मेरा मतलब काफ़ी काम मिस होगा. मिस नहीं मिड में. ओवरऑल अपने गेम के पास 3 kills है, अभी 4 हो गए. लूशन इज फेड, गैरन इज फेड, दैट्स होपफुल. पर आप देखना इस गेम में काफ़ी टेस्टेड गेम है. तो अभी अर्ली गेम, बिकॉज लूशन अर्ली गेम एडवांटेज होता है, तो ही इज किलिंग, बट लेट गेम अभी काफ़ी डिफरेंस आएगा. So Ziggs को ऊपर 3 किल मिल गए. Ziggs went top side and he got 3 kills. अब मेरे लिए मुसीबत होने वाली है. अब वो मेरे से काफ़ी गोल्ड एडवांटेज पे जा चुका है. वो टॉप में जाके मेरे जंगलर, मेरे सपोर्ट, मेरे डीसी को मार के आया है. And he is full HP. And he has a blue buff. So now he has gold advantage. कोई बात नहीं, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता. बाय द वे, now Shen is here. I could have engaged, but the thing is Riven is also here. Riven is playing so good in this game. I mean, Ziggs is playing aggressive just because Riven is letting him do that. अभी बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो. रिवन इज गोइंग टॉप में एंगेज हो सकता है.
Ziggs used ult, which is good because अभी ड्रैगन आने वाला है. Ziggs used ult और लेकिन उसकी ult 1 मिनट से ऊपर का कूल डाउन होगा. तो अभी उसका ult उसने मुझे पोक करने की. Oh my god, he may kill me here. Calculated. I knew that I could clear lane and run. Actually, I didn't know. I just survived. Ziggs boosted हो चुका है काफी सारा. So, Riven is missing. Okay, Riven is here. Riven came to the Herald. That means they are not even taking Dragon. So it's a huge mistake by them. We have taken Herald here, and we can even rotate faster to the Dragon because we have, मतलब our Baron lane पे हमारे पास advantage है. Now we can take the first turret here because मैंने एक plating ले ली थी starting में. तो ये first turret तो मिल जाएगा हमें. Good. I could have gone and took half of the turret plate gold, but I rather decided to give it to Shen. Now also, again we have advantage on the dragon also. I mean, dragon पे we can rotate faster. So I see Ziggs, Singed, और मैं उसको पहले ही थोड़ा poke कर दूंगा. That's what you want to do with Orianna. पहले से ही poke कर दो, थोड़ी बैंड बजा दो. तेरा मतलब ओरियाना का फोक डैमेज ही है भाई. अभी अर्ली गेम 3 आइटम से पहले वो कट के अलावा और कुछ कर नहीं सकती. वेरी गुड अल्ट बाई सोना. Ziggs killed Sona. Huge shockwave on 3 people, but I have no damage. It was such a good, and I got singed. Now Ziggs being super annoying here. He won't let us recall. Shockwave मस्त था मेरा. 3 लोगों पे एक साथ पड़ा. हे भगवान, रिकॉल नहीं करने दे रहा है. गुड एंगेज एक्चुअली. फ्लैश ऑटो किल सिक्योर 300 गोल्ड. अभी देखो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी. मैंने जैसे ही अपना शील्ड शेन को दिया, रिवन मेरे ऊपर एंगेज कर दी. तो मेरे पास कुछ भी बचा नहीं था. मैंने शील्ड और एसटी वेस्ट कर दिया शेन पे, तो रिवन मेरे को इजीली किल कर दी. नॉर्मली आई नेवर डाई विथ ओरियाना, मतलब मरता नहीं हूँ मैं जल्दी ओरियाना से. बट हेयर आई डाइड बिकॉज अभी I didn't do a mistake. मतलब Riven was not visible. That's why I used S3 on Shen. But Riven was just lucky कि वो उसी टाइम engage की मेरे ऊपर जब मैंने अपना S2 और shield Shen पे डाला. I think Riven will die here. It's close there. Lucian okay. Lucian got the kill and he flashed the karma cube. अभी तो कैरन भाई आके मेरा आधा वेव खा जाएंगे. कोई बात नहीं, होता है. एक्स्ट्रा अल्टिंग कारमा डैमेज ही नहीं है भाई. क्या किया? जस्ट इट्स अ इनिशिएशन टूल. में हेल्प अदर्स टू काउंटर सीसी, बट और कुछ नहीं कर सकते उधर. So recall? No, I rather thought कि I will clear away because अभी तो recall करके मेरे को कोई item मिलने नहीं वाला. I just put a ward और मैं एक और wave clear करूँगा अभी फटाफट. और maybe I can deal some damage to the turret. Yes, I am going for turret damage. 1 auto, 2 auto and then karma आ गई. कभी karma आ गई कभी एक बार में wave भी clear कर दिया उसने. पर उनका wave clear काफी अच्छा है. Ziggs, karma. The Shen is playing very good actually. Otherwise Riven अभी तक हमारा बैंड बजा चुकी होती. Sona is also doing a good job, although वो मर चुकी है कई बार, लेकिन उसका heal is very important. आप देखोगे अभी लेट गेम में Sona is so helpful against Ziggs. Ziggs का आधा से ज्यादा पोक तो Sona न्यूट्रलाइज कर देती है. This is what you want to do with Orianna. Whenever you're going somewhere blind, you just put your ball in the bushes to check, like, see, I know Ziggs is coming here. I go on Ziggs.
I flashed for 6. I took the ball there, but he went on the other side inside his head. All S3, S2. Bye bye. No chance. Now I have, like, see the score. My gold and 6 gold. It's nearly the same now, even though he has so many kills. But somehow I have caught up. Orianna, I don't recommend anyone to play Orianna unless they are very good. I mean, this is one of my main champions. I have so many games with Orianna. I have a pretty good win rate with her. But in this patch, I won't recommend anybody to play Orianna because, to be honest, she's shitty as fuck. 3 items तक आप कुछ करते नहीं हो. Very good shock rate. Nice kill on to Samira. तो what I was saying that 3 items तक आप कुछ करते नहीं हो और 3 items बहुत मुश्किल से वो कोई ऐसे गेम करते हैं रिवन डेड. बहुत मुश्किल से कोई ऐसे गेम होते हैं जिसमें आप 3 items के ऊपर 3 items तक तो एल्डर ड्रैगन आ जाता है आजकल. सो शी इज नॉट अ गुड चैंपियन राइट नाउ. इतना लेट गेम चैंपियन लेने का कोई मतलब ही नहीं है जब आप लेट गेम पहुंच ही ना पाओ. तो अभी जिक्स को देखो, एक आइटम पे कितना डैमेज कर रहा है. आप एंड में भी देखना कि जिक्स का डैमेज मेरे से बहुत ज्यादा होगा. पर ठीक है, if you are good with Orianna, if you are god tier Ori player, then you can win any game with Orianna. Like, she has such a beautiful kit. But if you're not, then don't play her. This is not the correct patch to play her. There's so many good other mages and assassins you can do in mid lane. Corki right now is very good actually. I play a Corki game, so I have some Corki games. I'll upload some. So here we got Cleon singed, Riven going in, Riven, let's target Riven. So I'm doing what I'm doing. I'm using my, because I have this item that, naam hai yaar iska, Cosmic Drive. So because I have this Cosmic Drive, I can kite very well. So in between I'm putting some auto attacks too. And I'm text flashing, Rhyla shield is up. Oh my god, 6 RAM. Okay. Maybe Samira. Oh, so I got Samira. So this Cosmic Drive, see my item build. Like I have this Ralai's Crystal Scepter and then Cosmic Drive. This is all just cooldown. I don't have any damage. But I can't build damage at this point. If I build a Rabadon second item, if I build Liandry's, anything like that, I will have so long cooldowns. So if I miss one skill or two, then for 4 or 5 seconds I'm useless. Like I won't be doing it. Auto attack range में मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से ही जा रहा हूँ. I need this Cosmic Drive. I need a shield and mana from the Crystal Scepter. So this is pretty much required on Orianna. This बहुत straightforward build है. इसके अलावा आप कुछ build कर ही नहीं सकते इस champion. You can go for full AP also, like Ludens into Rabadon, into Arctic Orb, everything. Like, but I don't like that build. उसमें स्केलिंग बहुत समय लगता है उस बिल्ड में, तो that is more costly also. Here I'm going third item Liandry's because I thought they have some tanky champions like Singed, Riven, etc. So Liandry's will be a good option, and although I'm poking, so Liandry's better for poke. Riven went in. Okay, I thought I may kill Riven. Now here you see, like nobody in my team is helping me. I flashed Riven stun, but somehow she got up to me. Like there. So that's what, like, if you do a single mistake, Orianna पकड़ी जाती है तो बहुत squishy है, बहुत जल्दी मर जाती है. So just one Riven stun and I'm dead. Baron इतना टाइम किया भाई साहब. Exhaust all that, Baron minions, Samira, Riven is tanking all that. It's just hard steal, man. This item is fucking broken on some champions. It didn't even have any armor. Just that Black Cleaver and
Hot Steel, he just has HP, but he's still so tanky. I mean, I don't understand how does this work. See what I'm doing. Just checking bushes, speeding my Garen up so that he may catch the Zig, but he didn't go for it. So bhai, regarding language, I'm using English and Hindi both. So I'm targeting primarily Indian audience. So I think we all are comfortable with both the languages. Since बहुत deep चला गया, सोना अल्टीमेट इस खेल रहा है. सोना का अल्टीमेट बहुत अच्छी है. तो नया अल्टीमेट. He couldn't even move, slow, stun, everything. So Singed is already dead. So and so is that. There's Ziggs. Ziggs is dead. So now game is pretty much ours. Let's see if we can do something here. Like Karma, okay. Anything Karma. Karma is dead. I got the kill. Good, good, good. Now this guy, I can kill this guy. If somebody tanks, I can kill. Yeah. Oh my god. She used her escape. I don't know why my ult is not dealing damage. The damage in here, like this on Samira, she just got CC but no damage. And it comes from within, it's not a projectile that you can block with Samira's wind shield. Hey, 3 dragon. So now we have 2 dragons and they have fun. We'll go for the Elder now. Next Elder spawn hoega to. Recalling getting Stasis over Rabadons. I could have gotten Rabadons, but I went for Stasis because at this point of the game, I just need to survive. Even though I'm dealing a little bit less damage, I do have the needlessly large rod, but मेरे को survive करना ज़्यादा important है अभी. अगर मैं मर गया तो समझो गेम गया. You can see मैं बस 2 बार ही मरा हूँ अभी तक, पर मैं नॉर्मली नहीं मरता हूँ. ओरियाना अगर आपको अच्छा खेलना आता है तो ओरियाना just doesn't die. It's a champion nobody can catch. बहुत फास्ट से खेलना होता है और कोई डैमेज नहीं पड़ता है आपको और बहुत आराम से टीम फाइट कर सकते हो. यहाँ मैंने अल्ट मारने की कोशिश की और सिर्फ समीरा पकड़ी गई. कुड हैव बीन सच अ गुड अल्ट बट थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने. यहाँ पे से उन्होंने अल्ट अच्छा लगा. Now we can chase. See the Ziggs poke, man. Ziggs का poke इतना ज़्यादा है. तो शेन और गैरन नहीं होते तो हम कभी नहीं जीतते ये टीम फाइट. लाइक मैं और लूशन एंगेज भी नहीं कर पा रहे. आप देख सकते हो. So hard for me and Lucian to engage with the Ziggs. After सोना नहीं होती वो हमें हील नहीं. Good kills. समीरा bye समीरा. ये भगवान इतना poke. Just because we have a Sona, we were able to go through that. Ziggs is so OP. I'll be doing Ziggs soon also. Ziggs, Corgi, these are some champions doing very good mid lane right now in this patch. So I think this is the game. I just splashed, went for the Ziggs. Wow. Genius. I'm genius. I had stasis by the way. My stasis tha. And I feel so lazy somehow. It's not like my reaction time is slow. I just didn't want to use stasis. I didn't think of why should I? I know the game is ending. Okay, so I hope you guys have enjoyed this gameplay of Orianna mid against Ziggs. And I'll upload more such videos very soon. So please subscribe to this channel if you like my content. It will really encourage me to do more videos. Especially Indian audience request करता हूँ. And play Wild Rift more is such a good game. We hope अगर हमारे पास audience ज़्यादा होगी. See my damage. See I have 9 kills. Ziggs only has 8, but my damage so less. I'm ashamed. I hate if I'm with Orianna and I have dealt. This is my rune setup: Phase Rush, Text Flash, Transcendence, Mana Flow, and Bone Blade. Okay, thank you for watching. Let's see you guys in another video. Bye bye.